जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस गुड मॉर्निंग। कहाँ गुड मॉर्निंग हो रही है बताओ? आपकी गुड मॉर्निंग हो गई? ठीक है, रहने दो इसे। आपकी गुड मॉर्निंग हो गई हैं भैया? लाइक डन, थैंक यू भाई, थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप लोग बताओ? आप लोग कैसे हो? जय भीम। गुड नाइट जीजी, बाय बाय। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, बाय बाय। आपका गुड नाइट हो रहा है पर भैया का तो गुड मॉर्निंग हो रहा है। लाइक डन दीदी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आई एम ठीक हूँ। आई एम ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, मैं भी। थैंक यू भैया, थैंक यू रवि भैया, थैंक यू सो मच। आई एम ठीक हूँ। खाना पीना हुआ कि सिर्फ आई एम ठीक ही हो? आज क्या क्या खाया दीदी? मैं बता दूंगी ना, फिर हंसते रह जाओगे। मुझे आज खाने में कुछ मिला नहीं भैया। सब कुछ हो गया। सब कोई लाइक करे। अब सोने आया हूँ। सोने आया हूँ कहाँ? अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? अब सोने आया हूँ। आकाश, ये उल्टा काम मत करो, मत। मैं क्या करूं? इतनी टाइपिंग ऐसे मत करो। आज क्या क्या खाया दीदी जी? चटनी चटनी खाया रवि भैया। सिर्फ चटनी रोटी। ना तो चावल ही खाने को मिला आज, ना सब्जी। आज मूर्ति विसर्जन था सरस्वती पूजा का। अच्छा, सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन में गए थे भैया? किए कि नहीं किए? आज मैंने चिकन, भात, रोटी खाए हैं। मैं तो चटनी रोटी खाई, बताओ। चटनी रोटी खाई, इतनी टाइम दलिया खाई बस। और खाना खाने का मन नहीं हुआ। पनीर बना था, पनीर तो खाती नहीं। फिर वैसी कोई चीज खाती नहीं। आज हस्बैंड की छुट्टी थी, ये लोग अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं। मैंने कहा चलो एक दिन चटनी ही खा लेते हैं हम। सबका डांस इंजॉय मजे। अच्छा, करना बहुत अच्छा लगा। आप डांस किए कि नहीं? वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए था आपको। थोड़ा हम लोग भी देख लेते इसी बहाने। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, नीला सलाम आपको भी भाई। कैसे हो आप? एक बार आप अपनी आईडी चेक करना कमेंट करके। आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई, आप सुनाओ, आपका खाना पीना हो गया है दीदी? हाँ भाई, मेरा खाना हुआ, आप बताओ आपका हुआ? ओ दीदी जी, आप लगती भी हो चटनी जैसी। अच्छा। दीदी, इतने बड़े बड़े कमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करने के लिए बोलिए दी। मैं कब से मना कर रही हूँ भाई, तभी से मना कर रही हूँ, नहीं मान रहा, क्या करूँ? मैं भी खाना खा लिया हूँ दीदी। यही आपका भांजा बदमाशी कर रहा है। ओके भाई, थैंक यू।
रवि भैया मैं चटनी जैसी लग रही हूँ? चटनी मेरी फेवरेट है। खट्टी वाली चटनी मिल जाए तो सब्जी वब्जी सब दूर कर दूंगी। सही बात बोले हो। अरे भैया मैं खाने में ना बहुत ऐसी हूँ कि मेरे से सब खुश जाते हैं, चाहे जहाँ रहूं। सब लोग बोलते हैं कैसे क्यों आ जाती हो जब तुमको कुछ खाना पीना नहीं होता है तो। मत बेटा करो बदमाशी, काहे कर रहे हो? मैं अब 4 लाइन का तू कर। मैं तो आज मशरूम रोटी सेवई बनाया था दीदी। अच्छा भाई। मेरे तो सुबह मटर पनीर, इतनी टाइम चिकन उकन जो भी अपना था अपने पसंद का सब लोग खा पी रहे हैं तो मैंने कहा चलो एक दिन मैं चटनी खा लेती हूँ। मुझे बोलती दीदी मशरूम भी तो नहीं खाती भाई। आप लोग भी तो अपने पसंद का ही खाते हो, मैं खिला देता। सेवई भी नहीं खाती और मशरूम भी नहीं खाती, पनीर भी नहीं खाती। चटनी बेशक खा लूंगी। चटनी, हाँ चटनी तो खाती, चटनी मेरी फेवरेट है। हंस रहे हैं भैया, आपको भी खा लेती थी। एक दिन में खाने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, खा लेना चाहिए तो आपको भी चिकन वगैरह। ऐसा नहीं है रवि भैया, जब खाती ना तब पूछते ही नहीं आप लोग, तब बनता ही नहीं। जो चीज खाती वो नहीं कोई कहेगा बना के खिला दूं। ऐसा कोई बात नहीं, ना खाने वालों को बहाना है। ऐसा नहीं है भैया, बहाना नहीं है, सच्ची। बहाना नहीं, मुझे सिंपल खाना पता नहीं क्यों शुरू से पसंद है। लोग बाहर जाते हैं, होटल है ऐसे वैसे जगह खा लेते हैं, मैं कहीं नहीं। शादी पार्टी में लोग जाते हैं अपने मन पसंद का पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगी ना। बस चावल सब्जी अगर रहेगी मेरी पसंद की थोड़ा सा खा लूंगी। सब लोग बोलेंगे क्या आती वो पार्टी में जब तुमको कुछ खाना पीना नहीं रहता है। दीदी मैं आपके लिए मैं पालन रखूंगा, जो जो आप नहीं खाती हो मैं उन्हीं सभी चीजें वही सभी चीजें बनाऊंगी। आप भी मेरे बड़े भैया से कम थोड़ी हो। एक बार ऐसे क्या हुआ ना भारती भाई, हमारे जो बड़े भैया वो भी चिढ़ते थे हमसे। नहीं जो खाती थी वही जबरदस्ती मुझसे वही बनवाते थे, बनाओ। एक बार क्या हुआ, मैं खाती नहीं, वो ना कद्दू, गाँव में नहीं लोग ऐसे उगा देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है कद्दू लौकी, कुछ नहीं खाती थी। तो वो बोले कि बनाओ, मैंने कहा ये चीज नहीं बनेगी। बोले कि बनाओगी कि नहीं? अच्छा बनाई। फिर कहे मम्मी इसके लिए कुछ सब्जी मत बनाना। उस दिन चटनी से खाया। फिर शाम को अपना मछली इसलिए लिया के बनाए। बोले खा लो, मैंने कहा मैं खाती हूँ। फिर चटनी से खाया। ऐसे 2-3 टाइम लगाए मुझे। मैं पापा के सामने जाके रोने लग गई, मैंने कहा मुझे चटनी खानी पड़ रही है। कह रहे हैं क्यों बेटा? मैं कहा मैं नहीं खाती, मुझे अम्मी से कुछ बनवाने भी नहीं दे रहे हैं भैया। फिर पापा गए समोसा वमोसा लेके आए, फिर खा के सोई। वही हाल आप कह रहे हो। दीदी जी कानपुर कब आ रही हो आप मेरे यहाँ? पता नहीं भैया, रवि भैया कब किस्मत में ऐसा होगा। आप तो आ सकते हो, आप ही आओ दिल्ली। भूरा बोला जाता है दीदी किसको? बताओ। उसी से मुरब्बा बनता है दीदी। नहीं भाई उससे नहीं बनता है,
वो वाला जो होता है वो अलग होता है, वो जो कद्दू होता है वो अलग होता है। जिससे मुरब्बा बनता है वो तो व्हाइट व्हाइट सा होता है, और जो सब्जी वाला होता है जो डार्क ग्रीन होता है। अच्छा बनाई कि नहीं? क्या बनाई? सब्जी तो बना दी थी भैया, खाई नहीं ना। मछली थोड़ी बनाई, वो तो हमको बनाने ही नहीं आता। पता नहीं कब नसीब होगा ऐसा दीदी जी, ऐसा नहीं है रवि भैया जी, जरूर होगा, जरूर होगा, इतना तो मुझे पता है सभी भाइयों से, ऐसा तो नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कभी न कभी तो सब लोग इकट्ठा होंगे ही। उसको आप क्या बोलती हैं दीदी? पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ उसको भी कद्दू बोलते हैं, व्हाइट वाला कद्दू और ग्रीन कद्दू। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? थोड़ी सी हो जाती है, एरिया एरिया के हिसाब से उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धा। सुरेश भैया जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान। कैसे हो आप? स्वागत है। जब आप आओगी तब मैं भी आऊँगा। अच्छा, पार्टी करो फिर बुलाओ तो आऊँगी। किस चीज़ की पार्टी कर रहे हो बताओ, फिर आऊँगी। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम भैया, थैंक यू सो मच। आएंगे रवि भैया, जब कोई खुशखबरी आएगी ना तो आएंगे आपके घर। बहुत जल्द करेंगे दीदी जी, वही तो कह रही हूँ, ऐसे थोड़ी आऊंगी, नेक वोक लेने आऊंगी। नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय, थैंक यू सुरेश भैया, थैंक यू सो मच। ताकि कुछ खर्च करके आऊं तो उधर से कुछ मिले भी, है कि नहीं रवि? रवि भैया बताओ, सही बोला ना? थैंक यू, थैंक यू। जय संविधान, नीला सलाम। जय भीम भैया, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। बस अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आना, बस कोई बात नहीं है भैया, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आएंगे तो फिर आप भी अच्छे से तैयारी करके रखना। आपसे भी अच्छे से तैयारी करके रखना। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। सेम टू यू भाई। पानी की को पाने की कोशिश मत करना, मेरे घर आना तो काफी गिफ्ट लेकर आना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मेरी तरह से कुछ मिलेगा। समय बताएगा भैया, समय बताएगा। ऐसा थोड़ी आ जाएंगे हम, समय बताएगा। नमो बुद्धाय भैया, जय भीम, जय भीम। रवि भैया, दुबई वाले सुलू लुलू भैया आ गए हैं, जय भीम, स्वागत है भैया आपका। नीला सलाम। थैंक यू भैया, थैंक यू सोनू लुलू, सोनू भैया जी। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा बोला मम्मी ये कौन सा नमस्कार होता है, सुलू लुलू।
कौन सी चिड़िया का नाम कौन सी चिड़िया का नाम है? सोनू भैया जी, वीर जी आजकल नहीं दिख रहे हैं, किधर होती वीर जी? किधर होती? हम कब से आपका इंतजार कर रहे। ये कहाँ से सीख के आए हो सोनू भैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू भाई, मुझे भी बता दीजिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया जी। सोनू भैया दुबई में रह रहे हैं इस टाइम। भारती भाई आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो सोनू भैया वाली लैंग्वेज आप भी सीख लो। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। आपका खाना पीना हो गया है सोनू भैया? जय भीम, नमो बुद्धाय, भारती सुन। सोनू भैया जब से भाषा लाए हैं तब से सब हंसते हैं, और इनका साथ रवि भैया भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। भाभी जी सिखा दिए सोनू भैया जी को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय नीला सलाम। फूल कुमारी सिस्टर, स्वागत है आपका लाइव में। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम आपको भी। कैसी हो आप? सेम टू यू सोनू भैया, सेम टू यू सोनू भैया, भारती भाई बोल रहे हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आपका खाना पीना होती सुलू लुलू। भारती भाई कैसे पूछ रहे हैं सोनू भैया, खाना पीना हुआ आपका? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हम ठीक है सिस्टर, आप बताइए आप कैसी हैं? खाना पीना हुआ कि नहीं? नहीं बहन, मेरा खाना पीना हो गया सब कुछ, सब लोग खा पी लिए, बच्चे सो गए हैं, सिर्फ बेटा जग रहा है और हम, और बाकी दोनों लड़कियां उसके पापा तीनों लोग सो गए हैं। फुल सिस्टर सुलुलुलु। जो नहीं जानेगा भैया उसको बोलोगे तो बहुत बुरा मान जाएगा कोई। सबको ना बोला करो। सोनू भैया आप पिज्जा बनती कि बंद कर देती? आप सुबह से हंसा रहे हो आप लोग। सोनू भैया पिज्जा बनती कि बंद कर देती? सुलू लुलू बताओ। अब हम घर पर होती सुलू लुलू। अच्छा घर पे आज पहुंच गए, बड़े जल्दी पहुंच गए। खाना पीना हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या है सिस्टर सोनू सुलू लुलू का? अरे सिस्टर उनकी बेटी बोलती है सबको। सोनू भैया की बड़ी वाली लड़की सबको ऐसे बोलती है, तब से ये सबको बोलते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अब हम खाना खाती सुलुलुलु। अच्छा खाना खा रहे हो, तभी तो पूछ नहीं रहे हो किसी को। सोनू भाई आप इतनी जल्दी घर पहुंचती या कैसी होती? मुझे तो एक कॉमेडी की याद आ रही है, पता नहीं किसकी वो कॉमेडी थी। क्या नाम है उस भैया का, याद नहीं आ रहा, वो भी आजमगढ़ के हैं। वैसे रवि भैया ये सोनू भैया की शुरुआत है। एक चैनल बना लो आप दोनों भाई, ऐसे काम करो, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। भारती भाई चले गए क्या आप? बोले भी नहीं, कहाँ गए?
अरे नहीं, मेरी लड़की नहीं बोलती है, मैं भेजता हूँ वीडियो सुलू लुलू का। पता नहीं। रवि भैया बताओ कैसे बताते हैं, समझ ही नहीं पाती हूँ सोनू भैया की बात। थैंक यू सो मच फूल कुमारी सिस्टर। आपका हुआ खाना पीना कि नहीं अभी? आज तो आप बहुत लेट बनाई हो। हम आपको भेजती सुलू लुलू को। अच्छा, हमारे इन दोनों को तभी तो एक दिन रो ही रही थी। तभी एक दिन रो रही थी कि मम्मी झूठ बोल रही हो, सोनू सुन पापड़ी मामा हमको ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच। खाना तो खाकर कंबल के अंदर में मंडी करके आपको कमेंट कर रहे हैं। अच्छा सिस्टर, कंबल के अंदर हो। हम भी रजाई उजाई में बैठे हैं बहन। सर्दी बढ़ गई ना। सर्दी बढ़ गई है। खाना लेट खाते हैं थोड़ा सा सिस्टर हम लोग। हम भी लेट ही खाते हैं बहन, हम कौन सा जल्दी खा लेते हैं। आज हस्बैंड थे, डर की वजह से खा लिए साथ में सबके। नहीं तो हम भी खाना लेट ही खाते हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए रवि भैया, भारती भाई, सब लोग कहाँ चले गए? वीडियोग्राफी का सारी स्कीम नहीं बताई जाती सोनू भाई, नहीं सबको पता हो जाती सुलू। कुछ तो बताओ रवि भैया, मैं सच में नहीं जानती। मैं यही सोच रही थी ना, इनकी लड़की बोलती है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहन, थैंक यू। हम लोग सुलू लुलू की बहुत बड़े फैन होती। कौन है भैया बताओ। मैंने किसी की ऐसी कॉमेडी देखी थी, होती है उसमें, पता नहीं कौन था, नाम नहीं याद आ रहा। पर इतना पता वो आजमगढ़ के हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। कौन है रवि भैया बताना। आप लोग कुछ छुपा रहे हो जो बता नहीं रहे हो। कौन है सोनू भैया?
बहुत बड़ा फैन होती है सुलू लुलू का। जब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या बताएं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। फूल सिस्टर, आपका खाना होती सुलू लुलू। सबका खाना पीना हो गया, आप बताओ आपका खाना हुआ। भारती भाई कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो आकाश? आकाश। हम्म? अबे सोनू मामा सुलू लुलू पढ़ रहे हो? आकाश खूब हंस रहा है। हमसे पूछ रहा था मम्मी ये क्या होता है, कौन है ये? हेलो, बोलो भैया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सुलू लुलू किधर होती? पता नहीं किधर गए। किधर होती किधर जाती कुछ बिना बताए। आ ही गए, बताए क्या, नाम लेते। फूल कुमारी जी को सुलू लुलू। फूल कुमारी जी सो रही हैं कंबल में। रवि भैया सच में मैं समझी नहीं, ये कुछ दिन से सोनू भैया बोलते हैं किस बात पे, मैंने सच में आज तक नहीं समझ पाए, बताते भी नहीं हैं। थैंक यू सोनू भैया, पहले बताओ इस सोलू लुलू वाला क्या भाषा निकल गया है, इस हम समझ नहीं पा रहे हैं सिस्टर, या कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे फेमस हो गया। पता नहीं बहन, मैं भी सोच रही थी ना इनकी बेटी बोलती है क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
ये लोग बताते नहीं हैं। दुबई की भाषा होती है ना, पता कौन सी कॉमेडी, ऐसे मैंने देखा था किसी ने बनाया है। या कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे फेमस हो गया है, मुझे भी लग रहा है सिस्टर। सोनू भैया जी आप चुपके से देखती सुनो। सच में सोनू भैया पास में होते तो मारती भी आपको। बता नहीं रहे हो, जो गुस्सा आ रहा है अब। बोलो, किसने बोला था ये शब्द? क्यों बोलते हो? आपको वीडियो भेज दी होती सुलू लुलू। कौन भेजा है? मुझे कुछ वीडियो नहीं मिली, बताओ कौन सी वीडियो, किसकी? किसकी वीडियो है वो, बताओ। किसकी वीडियो सोनू भाई? आपका नया बिजनेस क्या होती सुलू? सोनू भाई का नया बिजनेस क्या है? सुलू लुलू की। सही से बताओ सोनू भैया, किसने बोला था ये शब्द? किसने बोला था? अब हमको आपको अगले एपिसोड में मिलती सुलू लुलू। अगले एपिसोड में मिलती, जब तक बताओगे नहीं ना तब तक जाना भी नहीं है। अगले एपिसोड में बाद में मिलना। हमारा नया बिजनेस में रेलवे स्टेशन पर पानी बेचती सुलुलु। रवि भैया मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ। क्या बताओ, आप दोनों भाई में क्या मैटर है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। क्या चल रहा है बताओ। थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर। दोनों भाई एक से एक निकले हो, क्या बताएं आप लोगों को। हमारा बिजनेस ट्रेन में जेब काटती सुलू लुलू। अच्छा अच्छा, मैं भाभी से बताती हूँ सुलू लुलू आपको, फिर भाभी ठीक करेंगी आपको। आपकी कंप्लेन करनी है अब। और बिजनेस का नाम होती रेल जल होती सुलू लुलू, मिलने का पता बिस्लेरी सुलू। अच्छा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।
सोनू भैया आपकी कमाई तो बहुत ज्यादा होती, पैसेंजर के हिसाब से आपकी कमाई होती सुलुलुलु। अब लग रहा दोनों भाई को दुबई भेजना पड़ेगा, इधर से टिकट कटा देना है आप लोगों का। जेब काटने के लिए हमसे कांटेक्ट करती और हम एड्रेस बता। अगला स्टेशन इधर होती। रवि भैया क्या चल रहा है, मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बताओ। हम्म, क्या चल रहा है दोनों भाई का। किसी के जेब काटने की खबर मिलती हुआ 139 पर कॉल करती उसकी पूरी सहायता होती सुलू लुलू। अच्छा, दोनों भाई एकदम कॉमेडी कॉमेडी। दोनों भाई के ना स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना देंगे, फेमस हो जाओगे। आप लोग नहीं बनाना चाहोगे ना तो हम ही बना देंगे। वैसे तो आपकी, लेकिन हम तो आदमी सप्लाई करती, फिर 139 किधर से होती सुलू लुलू। अच्छा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। हम भी आज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। 139 आरपीएफ होती, फिर आपको अच्छे से समझाती कि आप जेब कैसे काटती सुन। अच्छा, समझाती कि चलो अब हमारा जेब काटो। रजाई तो नीचे गिर गई, कंबल भी ऊपर करो पैर से। हमारी इधर 139 नहीं होती, सिर्फ हम होती और हमारी टीम होती सुनो। अच्छा, अब दोनों भाई आपस में कर लो, क्या कर रहे हो। सोनू भैया पिज्जा काटते काटते जेब कब से कटने लगती सुलू लुलू। क्या करे, पिज्जा से कमाई नहीं हो पाती ना सोनू भैया की।
रवि भैया, लग रहा है आप भी सोनू भैया का सीख लिए हो भाषा। पिज्जा तो हम रोज करती, कभी कभी नया बिजनेस होती सुलू लुलू। अच्छा, हमारा और सोनू भैया दोनों को फ्रांस की पढ़ाई होती। अच्छा रवि भैया, आप लोग फ्रांस की पढ़ाई कर रहे हो। हमें तो आपकी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, क्या बोले हम। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। हम सुलू लुलू का बहुत बड़ा फैन होती। सुलू लुलू, सुलू लुलू है कौन, बताना जरा सोनू भैया। मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी, कॉमेडी ऐसी, वो भी आजमगढ़ के हैं। और दूसरा कोई होगा तो नहीं बता सकती। बताओ आप किसकी बात कर रहे हो, जल्दी बताओ सोनू भैया। बोलो। हम आपको भेजती सुलू लुलू। ओके ठीक है भाई। जेब काटने का बिजनेस, ओवर टाइम होती सुलू लुलू। अब नहीं देखती, कब से भेजती सुलू लुलू। हम कहाँ देखे हैं बताओ। हम तो नहीं देखे हैं। रवि भैया आप भी नहीं बता रहे हो ना, सोनू भैया, दोनों लोग नहीं बता रहे हो आज। बताओ कुछ।
ओके, बाय बाय दीदी, अब हम जाती सुलू लुलू। ओके रवि भैया जी, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बहुत हंसाए सुबह भी, इतनी टाइम हम अभी तक समझ नहीं पाए, कंफ्यूज ही है। ही हेलो सुलू लुलू। नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है सोनू भैया, बता। जल्दी बोलो। थैंक यू सो मच। ओके रवि भैया, गुड नाइट। जाओ दीदी, साधना दीदी की लाइव चल रही है। मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा था, मैं देख के चली आई। सोनू भैया भी गए थे, इनका तो कमेंट शो हो रहा, बट मेरा नहीं हो रहा है। आपकी कौन सी आरडी उसमें लगी थी? वीर भैया बोल रहे थे, रवि भाई जय भीम। सुलू लुलू वहां भी पहुंच गए हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। कहाँ चले गए थे आप? बताए भी नहीं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। दीदी क्या अब मैं जा सकता हूँ? मुझे ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है दीदी। ओके भाई, बिल्कुल जा सकते हो आप, बिल्कुल जा सकते हो भारती भाई। भारती भाई बिल्कुल जा सकते हो, अपना ध्यान रखना। सो जाओ अब, टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू सिस्टर फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओके दीदी, ओके भाई, अपना ख्याल रखना दीदी। बिल्कुल भाई, आप भी रखना। धमरात्रि दीदी, धमरात्रि भाई, बाय बाय, गुड नाइट धमरात्रि। मीला सुलू लुलू, अभी कहाँ देखे? अभी तो लाइव चल रही है ना, अभी नहीं देखा। आकाश हंस रहा है। दीदी जी से बात कर लो आप भी दीदी जी। कैसे बात कर लूं रवि भैया, बता। जब मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा, मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा रवि भैया, लाइव में कह तो रही हूँ, नहीं शो हो रहा कमेंट। थैंक यू सिस्टर फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।
दीदी क्या बांट रही हैं भैया? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। जल्दी जाओ रवि भैया, कुछ बट रहा है। बहुत सारा कमेंट करी हूँ, एक कमेंट भी शो नहीं हो रहा। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय बहन, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। सोनू भाई उधर होती दीदी जी। हाँ भैया उधर होती, पता नहीं क्या दीदी बांट रही हैं। सोनू भैया लाइन में लगे हैं, मिला नहीं क्या सोनू भैया? क्या दीदी बांट रही थी? ग्रेप्स? क्या था? मिला कि नहीं कार्ड आपको? इधर होती? अरे ये इधर उधर दोनों तरफ होती, इधर भी होती उधर भी होती सोनू भैया। देखती कहाँ क्या मिलती। कुछ मिला कि नहीं? मटर? अच्छा मटर बांट रही थी, मुझे लग रहा था वो है ग्रेप्स। लाइन में लग जाना चाहिए था भैया, फ्री का मिल रहा था तो फिर। फ्री का मिल रहा था ना, ले लेना चाहिए था मटर वटर सब। बहुत हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। ऐसा कौन है भैया? रवि भैया बताना हमको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू भैया। कदर करना अगर मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, एक तुम ही हो जिसका मैं सबसे ज्यादा जिक्र करता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुलू लुलू, ये तो आज सुबह से सुलू लुलू लेके उड़ रहे हैं, कहाँ हैं इनके सुलू लुलू को समझ ही नहीं आ रहा मुझे। किसने सिखा दिया आपको?
हैवान बनकर बुरा सोचने की बजाय इंसान बनकर अच्छा सोचना ही जीवन जीने का प्रथम और आखिरी उद्देश्य है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, सही बात है, आपकी बात 100% सत्य है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वो हमारा हो, वो भी हमारा हो। खैस कुछ क्या लिखे भैया, कुछ कश्तियाँ डूब जाया करती हैं, जरूरी नहीं कि हर कश्ती के नसीब में किनारा हो। क्या बात है, सच राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी सुपर चैट नहीं होता आपके चैनल पर? जब मोनेटाइज ही नहीं हुआ सुपर चैट कैसे होगा सोनू रवि भैया, बताओ। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तभी तो होगा। जिस दिन हो जाएगा मोनेटाइज उस दिन आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको हम पहले ही बता देंगे। सिर्फ सुलू लुलू होती पागल भाई, एक ही बात को रट लगा रखी हूँ थैंक यू सो मच। एक ही बात को सुबह से लगा रखे हैं, क्या होती है क्या होती है। उन्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे उनसे दूरी अच्छी नहीं लगती, कोई फासला मिले कि खुश हो, दोनों फासलों में मेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। ऐसी क्यों भैया? खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। बिल्कुल 100% भैया सही है। अगर सफलता पानी है दोस्तों तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। बिल्कुल भैया बिल्कुल सोनू भैया, बात तो आप लोगों की सही है। कपड़े तो अच्छे पहन लिए मगर विचार वही गंदे हैं अभी। सही बात है भैया।
दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। सोनू भैया आज आप काहे नहीं लाइव चालू किए? जमीर बेचकर अमीर बन जाना इससे अच्छा है फकीर बन जाना। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है। ये बात तो आपकी बिल्कुल राइट है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। बिल्कुल भैया सही कह रहे हो आप लोग। तन को शो बंदिशे मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोग। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तन को शो बंदिशे मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोग। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ना चलता। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है। ये बात तो आपकी सही है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। सब ऐसे नहीं होते हैं रवि भैया जी। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। सही बात है सोनू भैया। तमाम उम्र अजाबों का सिलसिला तो रहा, ये कम नहीं हमें जीने का हौसला तो रहा।
दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। बात तो सही है भैया। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है, मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, राइट। ईमान ही इंसान का सबसे कीमती धरोहर, सबसे कीमती धन होता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 100% भैया, आपकी बात बिल्कुल राइट है। सता ली जिंदगी, जितना सताना है वो कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। दरवाजा बहुत ज्यादा आकाश आवाज आ रहा है। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो ना, वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। बिल्कुल बिल्कुल भैया, रवि भैया, सोनू भैया, सही कह रहे हो। जहाँ इंसान की कोई इज्जत नहीं है ना, वहाँ सच में, लेकिन ये खो जाता ना इंसान का कोई जैसे अपनापन लगा होता है। चाहे झोली पैसों से भरी ना हो, मगर होठ हंसी से जरूर भरी हो। बिल्कुल भैया बिल्कुल। भूतिया दरवाजा बंद खुल रहा है। नहीं भैया, ये ना सर्दियों में ऐसे अकड़ लेता है ना दरवाजा, बाहर से कुंडी लगाए ना नहीं लगता है। और गर्मियों में अपने आप अगर सोचो कि ऐसे भिड़का दे बिना कुंडी का तो टिकेगा नहीं। इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। सर्दियों में एकदम ये भी अकड़ जाता है और गर्मियों में अपने आप खुल जाता है।
राइट सोनू भैया जी। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है, मेरे दोस्त मुश्किल में कोई साथ नहीं देता आंसू के सिवा। सही बात है सोनू भैया, बिल्कुल राइट। तुम मिले तो यूं लगा हर दुआ कबूल हो गई, कांच सी टूटी किस्मत मेरी हीरो का नूर हो गई। क्या हुआ है रवि भैया, कोई बात है क्या जो बता नहीं रहे हो? हम्म। कहाँ जा रही हो? सो जाओ, जैकेट निकालना है, निकाल दो, जैकेट निकाल दो बाबू, मोटी लग रही है ना, निकाल दो। गर्मी लग गई, निकाल दो, आराम से आराम से। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। बिल्कुल सोनू भैया, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो जा बेटा, सो जा, यही। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। किस्मत पर रोना मैंने छोड़ दिया, अपनी उम्मीदों को मैंने हौसलों से जोड़ दिया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। किस्मत पर रोएंगे तो जिंदगी भर रोते रह जाएंगे।
यकीन मानो दोस्तों, मेरी बस शक्ल, हिम्मत और जिंदगी खराब है, दिल नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो रवि भैया? ख्वाहिशें तो बहुत है दोस्तों, फिलहाल अभी किस्मत और हालात दोनों के सताए हुए हैं। क्या हुआ रवि भैया? कल भी आप इमोशनल हो गए थे, आज भी बताए भी नहीं। आप बोले थे फ्री हो जाएंगे तो बताएंगे। बाय भैया, बाय बाय, पर बता देना क्या प्रॉब्लम है। मेरी किस्मत ने मुझे बहुत रुलाया है, मेरे अपनों ने भी मुझको ठुकराया है, वो भी किसी और का हो गया आज, जिसको हमने हर वक्त अपना बताया है। सोलू लुलू। बाय बाय, बाय बाय भैया। मैं समझ सकती हूँ, लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों में कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात है। सही बात है सोनू भैया, आपकी बात पूरी राइट है। रवि भैया कुछ परेशान तो हैं, बता नहीं रहे हैं, कल भी परेशान हो गए थे और आज भी। ऐसी कोई बात तो जरूर है जो भैया बताना नहीं चाह रहे हैं। बोलो सोनू भैया। रवि भैया कल से परेशान लग रहे हैं, वक्त सबका आता है। बात तो सही है सोनू भैया, पर किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। समझो तो समझो, नहीं समझो तो समझो ही नहीं। क्या फायदा दिखावा करने का।
थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। आज आपने क्यों लाइव नहीं चालू किया बताओ? मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी फीलिंग के हिसाब से लिख रहा था। मुझे भी नहीं पता है सोनू भैया, लेकिन रवि भैया कल से परेशान हैं। कल से परेशान है वो। बहुत ऐसी चीज़ होती जो लाइव में नहीं शेयर की जाती किसी की। फर्क बस यही है। बोलो सोनू भैया, सो जाओ आप भी। लाइव नहीं चालू किए तो सो जाओ, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। थैंक यू सो मच। सोलो लूलू, 1 मिनट।
लाइव एंड करके सोना। क्यों भैया, सोनू भैया ऐसा क्यों? बोलो, मैं बस जग ही रही हूँ। फोन में चार्ज नहीं है। किसके फोन में, आपके? आपके फोन में चार्ज नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं, चार्ज कर लो फोन। आज दोनों फोन घर पे ना, हस्बैंड वाला भी है, हस्बैंड आज घर पे है, तो हम अपना ही लगा देंगे सपोर्ट में ऐसे। मेरे समझ में नहीं आया कुछ। रवि भैया बहुत परेशान लग रहे हैं, कल भी थे आज भी। इतना तो हंसे, लास्ट में कल भी ऐसे परेशान हो गए थे। क्योंकि रवि भैया इतना परेशान होते नहीं है कभी। ओके भाई, बाय बाय, सो जाओ आप भी। आकाश सो जाओ, फोन रख दो। बाय बाय भाई, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।
लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। बिल्कुल राइट सोनू भैया, सही बात है। बात आपकी बिल्कुल सही है। रवि भैया सबको हंसाते थे, कल से वही परेशान है।